Yep. So YouTube is live right now. So once again, welcome all to today's session that's on market outlook and index strategy by Axis Direct. I'm Rohit, and I'll be your co-host for this session. And I'm having with me Mr. Karan Pai, who is a research analyst and who will going to give you the view on the this market and the following sectors which are trending right now, or which are the falling right, like which are in the bearish stage. So with this, I'll hand over the session to Mr. Karan Pai. Now, before we go ahead, means to for the session right now, just want to check on the final check on my audio and if the screen is visible. Just type yes on the chat box if my voice is audible to you all and screen is visible. जो लोग ये सेशन अपना वेबएक्स से अटेंड कर रहे हैं, so then they can see that on the top right bottom corner there is a chat section is there. You can just type yes, and those who are attending this from our YouTube channel, they can just type on the live chat section, the means you can just type that yes, our voice is audible to you all. So just a quick final check on this. Thank you so much for the confirmation. So now talking about the market right now, it is 1,000 points crashed right now. Sensex is like 1,100 points crashed, and Nifty 50 is almost 1.4% down, followed by the Bank Nifty, which is 1.67% down. Nifty 50 ने open जब किया था, that was like the 24,045. It was like the 45 points marginally up. Now the low is around this 23,601. And talking about the Bank Nifty, which is means like was trading which opened around this 5990, and right now it is at 5167, almost like means I would say like 7 to 800 points down right now. Now, with this, I'll hand over the session to Karan Pai, because I can see like all the Nifty 50 stocks are marginally down right now, and means almost all the stocks are down in the Nifty 50. So, Karan, if you can explain over like how the charts are looking out today for the index, simultaneously like means about the Nifty 100 stocks that is performing, followed by Yeah. the support and resistance. Yeah. Yeah. So all over to you now. सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग इन एंड आज का जो दिन है अभी तक काफ़ी नेगेटिव लग रहा है एंड इसका सिंपल रीज़न है कि अगर आपने हमारा मॉर्निंग पॉडकास्ट अगर सुना होगा सो ग्लोबल क्यूज जो है थोड़े नेगेटिव है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई मीन स्पेशली दी एशियन मार्केट्स अगर आप सुबह जापान का अगर आप मार्केट देखते तो इट वाज अ नेगेटिव ओपन एंड क्वाइट अ बिट मतलब तकरीबन 1.5% नेगेटिव चल रहा है एट द मोमेंट एंड हैंगसेंग अगर आप देखोगे तो वो भी काफ़ी नेगेटिव था approximately half a percent down, more than half a percent down. So Asian markets में थोड़े cues जो थे they were negative, but GIFT Nifty थोड़ा positive दिखा रहा था. That is why we had that positive open in the Nifty. तकरीबन 40 point निफ्टी जो है पॉजिटिव ओपन हुआ एंड देन वहां से इमीडिएटली विद इन द फर्स्ट आवर ऑफ ट्रेडिंग हम लोगों ने एक नया हाई देखा इंडेक्स पर सो दैट वाज 24,089.95 एंड उसके बाद से अगर आप देखो तो कंसिस्टेंटली फॉल आया है एंड एट दिस पॉइंट अगर आप देखोगे तकरीबन 400 पॉइंट फ्रॉम द हाईज वी आर डाउन सो यहाँ पर एट द मोमेंट अगर आप देखोगे इंडेक्स ने कहाँ से रेजिस्टेंस लिया है एंड दैट वाज अप्रोक्सीमेटली दिस गैप एरिया सो अगर आपको याद होगा वी वर टॉकिंग अबाउट फॉलो थ्रू व्हेन दिस कैंडल वाज फॉर्मिंग एंड वी डिड सी एन हाई ऑफ अबाउट 24,200 गैप एरिया का बट देन नेक्स्ट डे देयर वाज अ डाउन मूव सो एक दादर से यू टर्न लेते हुए आपको दिख रहा है दादर मैं क्यों बोल रहा हूँ बिकॉज in that example where I was trying to explain the follow through, I had mentioned to Thane and दादर से अगर आप U-turn लोगे so that's not follow through. So follow through यहाँ पर missing था and Friday को we had a bit of negative day तकरीबन 0.8% down था and today is another red day approximately 302 points lower compared to the previous session close but अगर आप आज के हाई से देखोगे तो 400 पॉइंट से ज़्यादा की फॉल रही है आज के दिन so we'll quickly look at what the charts are telling and based on the price action it's a no brainer कि 24,000 से 24,200 का जो resistance zone है वो अभी भी intact है
एंड यहाँ से इमीडिएट सपोर्ट जो बनेगा दैट इज अराउंड 23,565 एंड आज का भी अगर आप लो देखोगे तकरीबन 601 का है. सो दैट जोन ऑन द डाउन साइड इज गोइंग टू बी अ बिट क्रूशियल फॉर टुडे, for not only for today but I would say for the sessions to come. So that is a bit important. Broader consolidation range, yeah, broader range for the market would be between 24,200 and 23,500, 500, 565, but I'll round it off to 500 or max 450 on the downside. Now, what if the index manages to break below the 450 mark? The next level that comes around is comes to is about 23,200 के पास, and below that जो next level है that is directly at 22,800. So a bit of a negative bias, price action के basis पर अगर जाए तो थोड़ा एक negative bias बनते हुए यहाँ पर दिख रहा है हम लोग को. एंड ऑल्सो व्हाट आई जस्ट ऑब्जर्व वाज, अगर आप देखोगे ये हाई कहाँ था, दैट वाज आल्सो ऑन द मल्टीपल टच पॉइंट लेवल्स अराउंड दीज जोन्स. सो ये जो 24,140 का जो जोन है वहाँ पर का रेजिस्टेंस, वहाँ पर वो टाइम के जो लोज थे वो एक रेजिस्टेंस था. एंड ऑल्सो ये डाउन मूव का अगर आप 50% का करेक्शन लोगे तो तकरीबन वो भी मैच कर रहा था. So all in all, it was like a cluster resistance, and we did not see a follow through once that level was broken out, and we are currently trading lower or inching lower. अब यहाँ से what we can expect, we'll quickly look at what the OI data is telling us. So I head on to the option chain. Option chain में अगर मैं निफ्टी डालूँ तो the 9th Jan expiry अगर मैं open up करूँ, and I'll just look for OI accumulation. So the first zone on the call side is around 24,000. So 24,000 is also a big figure. एंड उसके बाद आप अगर देखोगे तो 24,100, 24,200 का जो जोन है वहाँ पर तकरीबन 3 लाख के आसपास का OI accumulation है. Not exactly 3 lakh, but yeah, approximately 2 lakh 60 or 2 lakh 70,000. So round it off to 3 lakhs, utna OI accumulation hai. So that zone is going to act as a very crucial zone in the sessions to come. Put side की अगर मैं बात करूँ तो we have a bit of accumulation around 23,500, the zone that I just mentioned. And आज का लो अगर आपने देखा होगा तो it is 23,600 on the spot, not on the future, on the spot. So 23,500 का एक immediate support है, and उसके बाद अगर नीचे जा रहा है then 23,300 is what the market is looking at. So for our view to probably turn bullish is if the index goes above 24,200, 24,250 and sustains and follow through home. Unless and until that happens, the broader consolidation zone would be 23,500, 24,200. ये broad zone होगा index consolidation. Consolidation नहीं बोल सकते but range जो है broadly ये होगा. Now we'll quickly move on to the Nifty 50 stocks. Breadth अगर आप देखोगे it's a no-brainer. 48 stocks are declining, and जो लीड कर रहे हैं, जो ये फॉल लीड कर रहे हैं, दैट इज समथिंग लाइक बीपीसीएल, सिप्ला, एचडीएफसी लाइफ, टाइटन, दे आर ऑल डाउन. एंड अगर आप जस्ट गिव मी अ सेकंड, या so sorry, Tata Steel, BPCL, Adani Enterprises, Divi's Lab, they are all trading in the negative. So something like Tata Steel is another 0.5% away from falling approximately 5%. So 4.5% down on the Tata Steel. एंड मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स में थोड़े प्रेशर है, थोड़ा प्रेशर बनते हुए दिखाई दे रहा है. अगर आप आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स अगर आप देखोगे ये पॉइंट पर, देन अपोलो हॉस्पिटल, LTIM, ये जो है वो थोड़े ऑन दी आउट परफॉर्मिंग साइड. आउट परफॉर्मिंग साइड एज इन दे आर नॉट वेरी स्ट्रांगली पॉजिटिव, बट समथिंग लाइक LTIM 0.15% पॉजिटिव है. अपोलो हॉस्पिटल जो है वो 0.73% पॉजिटिव है. सो ऑल इन ऑल these are the stocks that are probably supporting the index at this point. सेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें, सो विल क्विकली मूव ऑन टू द 12 NSE सेक्टर्स जो हमारे बास्केट में हम लोग एक्टिवली मॉनिटर करते हैं. सो इसमें आपको क्लियरली दिखाई देगा कि 12 के 12 सेक्टर्स जो है नेगेटिव में ट्रेड कर रहे हैं. एंड विच आर द वंस दैट आर लीडिंग द फॉल, सो दैट वुड बी समथिंग लाइक निफ्टी रियल्टी, निफ्टी मीडिया. ये दो में फॉल आज के दिन में थोड़ा ज़्यादा है. No, just give me a second, sorry. Yeah, something like PSU Bank, metals, energy, इसमें फॉल थोड़ा ज़्यादा है. एंड जो
comparatively थोड़ा कम गिरा है for the day would be Nifty IT. Nifty IT a few minutes back when I was preparing the report वो थोड़ा positive territory में था, but not by a big margin. It was basically listless. It was 0.02% positive, but nonetheless थोड़े positive territory में. So this is what the index is telling us. This is what Nifty is telling us. We'll quickly take a look at what the Bank Nifty is doing at this point. एंड बैंक निफ्टी इंडेक्स की अगर मैं बात करूं आज के दिन, तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के चार्ट में थोड़ा ज्यादा वीकनेस यहां पर आते हुए दिखाई दे रहा है. सो द इमीडिएट सपोर्ट जोन फॉर द बैंक निफ्टी वुड बी समवेयर अराउंड 49,800. अगर वो निकल रहा है, सो आपको वो लेवल का जो सिग्निफिकेंस है यहाँ पर आपको दिखेगा 49,600 49,700 का. अगर वो लेवल निकल रहा है देन वी माइट सी अ फ्री फॉल प्रोबेबली टुवर्ड्स 49,800 के आसपास का. सो ओवरऑल एक थोड़ा बेरिशनेस आते हुए दिखाई दे रहा है. एंड न्यूज स्पेसिफिक की अगर हम लोग बात करें, देर आर आई मीन एक वो हो सकता है द चाइनीज वायरस, द कोविड लाइक वायरस जो है कर्नाटका में 2 केसेस आए हैं. बट देन मेजरली आई थिंक इट हैज टू डू विथ द एशियन मार्केट्स दैट आर एक्चुअली टैंकिंग. सो these are some of the highlights. And अगर बैंक निफ्टी स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं, तो just give me a second, quickly take a look at what are the bank nifty stocks that are actually pulling the index lower. So for the meantime, while the Bank Nifty option chain is getting uploaded, if you have any queries, anything, then you can put in the chat box. So अगर हम अपना चार्ट्स में अगर इंडिया विक्स की बात करें, दैट इज लाइक इफ Karan, if you can add the India VIX chart also, it is showing like the higher volatility right now. That is means it is, I think, like trading around this 15. India VIX is at 15 actually. And सो जैसे जैसे इंडिया विक्स बढ़ता रहता है, वैसे ही ज्यादा दिखाते हैं कि दैट ओके मार्केट का जो सेंटीमेंट्स है, दैट पीपल आर मोर इनटू द फियर साइड. सो अगर वो 15 से 20, लाइक इफ यू कैन जस्ट शोकेस द इंडिया विक्स चार्ट कर. एंड अगर मैं वही अगर इंडिया विक्स का चार्ट एक कंपेयर करूं 2020 का, जब कोविड स्टार्ट हुआ था, दैट वाज इन द मंथ ऑफ मार्च. ओके, so you can see कि that India VIX was around this that was जो हाई था वो तकरीबन 86 का था. बट देन यू कैन सी द वन साइड मूव दैट वी सॉ. ये मेरे ख्याल से स्टार्ट हुआ था 12th Feb, या अर्ली फेब में अप मूव स्टार्ट हुआ था. एंड मार्च 12th अगर आपको याद होगा, वो वॉलंटरी लॉकडाउन वगैरह सब जो स्टार्ट हुआ था, एंड देन देयर वाज अ massive spike. And the Nifty 50 went around this. I remember that if it went around this 7,500. Yeah. But for a trader perspective, yes, India VIX is something is very much important. So basically हम लोग जब ये आपको explain कर रहे हैं, we are just trying to tell you how India VIX is a gauge of fear. We are not trying to induce fear into you. ऐसा नहीं बोल रहे कि ये कोविड जैसा सिचुएशन है, बिकॉज अभी उस पर कमेंट करना बहुत अर्ली होगा. बट nonetheless we are seeing an up move in India VIX. So that is suggesting that there are there is a bit of fear in the market at this point of time. Right, it is trading around this 15, and hopefully like it should get settled, because means like about the Asians मार्केट है, जैसे करण ने बताया कि एशियंस मार्केट में भी थोड़ा न्यूज है इनफैक्ट. सो दैट्स द रीजन मींस विल इन अ डे और सो लाइक विल सी द सेटलमेंट ऑफ दिस. सो ऑल ओवर टू यू करण ऑन द बैंक निफ्टी. या सो बैंक निफ्टी की अगर अभी हम लोग बात करें, तो वी कैन सी दैट ऑफ द 12 स्टॉक्स 11 एट दिस पॉइंट आर डिक्लाइनिंग. मतलब ब्रेथ जो है इट इज स्टिल टिल्टेड टुवर्ड्स द बेयर्स. एंड हाईएस्ट लूजर्स अगर हम लोग देखें, सो दैट इज समथिंग लाइक जो जितने भी PSU banks है वो टॉप 3 लूजर्स में आ रहे हैं at this point of time. Something like Bank of Baroda, PNB, Canara Bank, they seem to be dragging the index lower. इसमें fall जो है वो 3% से भी ज़्यादा की है. And then you have something like Kotak Bank, which is again down approximately 2.7%, mild here and there. But yeah, overall एक थोड़ा negative tone on the banking index आते हुए हम लोग को दिख रहा है. एंड एक बार बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पर भी नजर डालते हैं. बैंक निफ्टी. So Karan, if you can just tell us that this Bank Nifty, how it will be performing for this month actually, because ये monthly expiry रहेगी Bank Nifty की. Yeah. So option chain पर एक बार नजर डालते हैं. And sorry, this is Nifty.
या बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पर अगर एक बार नजर डालें तो यू सी स्लाइट accumulation somewhere around 50,500 50,500 becomes a bit too close. So 51,000 पर अगर आप देखोगे तो तकरीबन 90,500 का OI है, एंड देन यू लुक एट 51,500, वहाँ पर अगर आप देखोगे तो तकरीबन 89,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का बिल्डअप है. So all in all, something like 50,500, 51,500. This seems to be the zone where the traders seem to be expecting the resistance. And अगर हम लोग पुट साइड में देखें तो immediate support जो है वो 50,000 का है. Now 50,000 should not be a surprise because it's a round figure. So round figure in generally acts as a very good support level. So 50,000 per there is a bit of support, and the next level that you would see is somewhere around 49,500. एंड उसके भी अगर डीप जा रहा है देन प्रॉब्ली 49,000. एंड बैंक निफ्टी के चार्ट पर भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई हैड एक्सप्लेन, या बैंक निफ्टी के चार्ट पर भी अगर आप देखोगे तो 50,000 से लेके 49,800 के आसपास जो है वहां पर थोड़ा सपोर्ट्स बनते आ सकते हैं. प्रोबेबल सपोर्ट्स, आई एम नॉट टेलिंग कि वहां पर सपोर्ट बन ही सकते हैं, बट आ सकते हैं. बट लुकिंग एट द पेस ऑफ द मार्केट, द मोमेंटम एट विच इट इज फॉलिंग एट द मोमेंट, टोन जो है वो थोड़ा ऑन द इट्स अ बिट मोर टिल्टेड टुवर्ड्स द बेयर्स. ऊपर ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो इमीडिएट रेजिस्टेंस वुड बी समवेयर अराउंड 50,500 बिकॉज मल्टीपल टच पॉइंट्स है. एंड ड्यूरिंग द डे अगर आप देखोगे दिस इज डिसाइसिवली ब्रोकन. ये जो फॉल आया है वो काफी फास्ट आया है. दिस इज डिसाइसिवली ब्रोकन. एंड अगर उसके ऊपर जा रहा है आई मीन वहां से भी अगर द मार्केट इज रिकवरिंग देन नेक्स्ट लेवल वुड बी प्रोबेबली 51,000 51,700. So basically, this the market on the recession side, that's on the 50,500 will be the major. 50,500. 50,500 is the major resistance right now. Yeah, as of now. As of now, if it is like on the support side, I think that is on the 49,800 या 50,000 के आसपास. हाँ, तो ये मंथली लेवल्स का एक आउटलुक है कि अगर बेसिकली लाइक द bank nifty break the levels of the support, then of course like it will be major down. Then of course like we have to identify the new downside on this. But एक जो major resistance है अगर वो break करता है then of course like we can closing अगर 5500 के ऊपर, then of course means it can be on the like we can see on the bullish side. But we can see right now that थोड़ा सा निफ्टी 50 रिकवर करने की कोशिश कर रहा है. दैट आई मींस 23,720 right now. If you can just Karan, if you can compare the chart of the Nifty 50 and the Bank Nifty and showcase कि एक Nifty 50 का क्योंकि खासकर ये वीक में एक्सपायरी है, that is on Thursday on 8th. Yeah. 9th is the expiry actually. Yeah, 9th is a Thursday. So 9th is the expiry. So Nilesh is having the one question that main sectors where we can expect the major where we can expect a major growth with current overall perspective to invest in for long term. If you can advise in general everything is down, especially energy, power and infrastructure and oil. Yes, so Nilesh, all the sectors are down, and we have released our this because this webinar is more majorly like focused on the options part. So we are giving you the market outlook and the index expiry strategy actually. Now, if I talk about like the sector specific or the stock specific, then I'm sharing you the one link on the chat box. You can refer that link, and where we have given the our New Year picks actually, that you can have a look because उसमें से भी अभी दो तीन stocks थोड़े ऊपर हैं जो अभी हम लोगों ने suggest किए थे. So you can have this look on this for investing for the long term specifically. We have given our New Year picks actually, which is declared on this 1st of Jan. So you can still have a take a look of this New Year picks. Yeah. So Karan, all over to you. या सो रोहित, जैसे मैंने बोला था कि अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट अगर साइड बाय साइड देखोगे, बैंक निफ्टी एट द मोमेंट सीम्स टू बी अ बिट मोर वीकर बिकॉज ये जो स्विंग लो था जो 31 दिसंबर को बना था वो निफ्टी ने नहीं निकाला है अभी तक, वाइल बैंक निफ्टी हैज बीन सक्सेसफुल इन टेकिंग दैट आउट. सो चार्ट पर वीकनेस थोड़ा बैंक निफ्टी में ज्यादा बनते हुए दिख रहा है व्हेन कंपेयर टू निफ्टी. But again, everything is based on what we are seeing right now, the price action right now. Price action shows RSI भी अभी थोड़ा down है, in fact both Yeah. Nifty 50 and Bank Nifty का, which is
एक अगर एक करण इफ यू कैन जस्ट एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली लाइक द आरएसआई बिकॉज आई रिमेंबर लाइक द टेक्निकल का जो हम लोग वेलेंस को क्वेरी था कि आरएसआई कैसे देखते हैं या हम्म। मेजर लेवल्स कैसे देखते हैं इफ यू कैन जस्ट रिएटरेट ऑन दैट. या सो आरएसआई देखने का एक कॉमन तरीका इज लुकिंग फॉर अ रेंज शिफ्ट. सो रेंज शिफ्ट जब भी हम लोग बोलते हैं, फॉर एग्जांपल ये पूरे फेस में आई जस्ट जूम इन ऑन द निफ्टी चार्ट. या सो ये पूरे रेंज में अगर आप देखोगे आरएसआई वाज ऑसिलेटिंग बिटवीन 30 एंड 50, करेक्ट. एंड एक बार मार्केट में मोमेंटम आना स्टार्ट हो गया, देन इट मैनेज टू मूव अबव द 50 लेवल एंड मोर स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द ओवरबॉट जोन. But then थोड़ा sell off आ गया index में, and then again it is back into that oscillating between 50 and the oversold zone. सो ये जो एरिया है या ये जो तरीका है, दिस अकॉर्डिंग टू मी इज द मोस्ट आइडियल वे ऑफ लुकिंग एट आरएसआई. नाउ अगेन देर आर सिनेरियोज वेर यू लुक फॉर bearish divergence, where you look for bearish confirmation, bullish divergence, bullish confirmations. Now over the past webinars हम लोगों ने इसका एग्जांपल्स भी आपको दिया है, हम लोगों ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है. So you can look at those older webinars and get an understanding of how to use RSI if you're looking for something like divergence or confirmation and all those things. But at the moment, I would suggest कि something like, just because ये काफी visible है and range shift जो है, range range shift जो है वो यहाँ पर काफी visible है. So that is going to be a bit crucial. So जैसे कि करण ने बोला कि दैट हमारे ओल्ड वेबिनार्स वी हैव ऑलरेडी डन ऑन द ऑप्शंस. सो अगर जो लोग पहली बार ये वेबिनार अटेंड कर रहे हैं दे कैन गो इनटू दिस आवर यूट्यूब चैनल एंड टाइप एक्सेस सिक्योरिटीज एंड under the live section there is all the this pre-recorded videos are there of the this options के ऊपर and technical analysis के ऊपर. So every Monday and Thursday we do the webinar on market outlook and Nifty 50 expiry. That's at 12 p.m. and Friday we do the technical analysis session. So last Friday भी हम लोगों ने conduct किया था, that is at 2:30 p.m. मीन्स टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है बेसिकली. सो जितना भी हम लोग अपना लाइक टेक्निकल एनालिसिस के बारे में समझाते हैं वो हम लोग पूरा उसमें कवर करते हैं. दैट इज आरएसआई किया. तो लास्ट टाइम काफ़ी लोग की क्वेरी थी कि हेकनशी समझना है या फिर कैंडल स्टिक्स और अच्छे से थोड़ा उनको इन डिटेल इन डेप्थ नॉलेज चाहिए एंड सम ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स. So again, this Friday we'll be conducting the session that is on technical analysis at 2:30 p.m. So those who are attending this session from our this YouTube, from our WebEx channel, I've already shared you the link. You can click on that link and go and like and subscribe the channel and hit the bell icon so that you can get the notification for our this upcoming session also. And again, those who are attending from this YouTube channel, I mean, if you are attending first time, then I would just suggest you that you can just click on this bell icon so that you can get the notification from our channel once we are live on the webinar. So Karan, yeah. So if you can just also explain about the intraday, means as a Nifty 50 का expiry रहेगा, that is on Thursday. So I interrupted you. Yeah, you can go ahead. Yeah. सो निफ्टी का अगर आप इंट्राडे लेवल्स देखोगे रोहित, सो समवेयर अराउंड 24,000 इज गोइंग टू एक्ट एज अ बिट ऑफ रेजिस्टेंस अगर यहाँ से हम लोग को पुल बैक दिख रहा है तो. एंड ऑन द डाउन साइड जो लेवल हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था 23,400 का, वो जो सपोर्ट है वो इंटैक्ट है. सो फ्रॉम एन इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ब्रॉड रेंज ये दिख रहा है समवेयर 24,000 ऑन द अपसाइड. नाउ वन माइट आर्ग्यू कि ये लेवल्स जो है वो काफ़ी दूर हैं एंड ऑल दोज थिंग्स, बट देन अगेन यू हैव टू कीप इन माइंड कि जब भी वोलेटिलिटी एक्सपैंड होती है, मार्केट्स में बड़े बड़े मूव्स आते हैं, तो आपके सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस भी थोड़े ऊपर नीचे होते हैं. I mean, जो डिस्टेंस है बिटवीन योर करंट प्राइस एंड द रेजिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द करंट प्राइस एंड द सपोर्ट्स, ये भी काफ़ी ऊपर नीचे होते हैं. सो दैट इज समथिंग टू वॉच फॉर. So currently talking about the Nifty 50 stocks के ऊपर, that is BPCL is almost down. I means 3%. That is 3.32% down right now. Followed by the Coal India is down around this 290. Now talking about this HDFC Life is also down. That is 2% down right now. So I'm taking like the majorly like the stocks which are basically like the 2 or 3% above those which are down right now. So Hindalco is around this 2.3%, followed by the IndusInd Bank, then Kotak Bank, and NTPC is again is down. NTPC green was up today in the morning because there was a news that is UP government ने means
that they have passed buy they have purchased for the buy orders actually. Then the last is about like the Tata Steel. So Karan, if you can just split to the screen about that sectors wise that कौन कौन से sectors down there जो आप explain कर रहे थे. So वो करना थोड़ा difficult होगा because No, no, 12 that particular charts. screen that अच्छा, okay, हाँ okay, वो yeah understood. Yeah. So अगर आप देखोगे सेक्टर्स में PSU banks is still under a lot of pressure and यहाँ पर अगर आप देखोगे जो सबसे बड़ा फॉल आया तो इट इज समथिंग लाइक बेसिक मटेरियल्स में है, एनर्जी में है, यूटिलिटी में है. सो ये तीन सेक्टर्स जो है वहाँ पर थोड़ा एक डाउन मूव हम लोग को दिख रहा है. टेक्नोलॉजी एट द मोमेंट, टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर जो है वो थोड़े बीटन डाउन है बट कंपेयर्ड टू समथिंग लाइक एनर्जी थोड़े कम बीटन डाउन है at this point. So now, meanwhile, if you have any questions, anything, then you can put in the chat box. So we'll just wait for a 30-second or so, and you can put in the chat box. And also let us know like how is that means with or the other sessions or the other topics you are specifically looking on the technicals or the fundamentals, so that we like to love to cover in our upcoming session. So you can just type in the chat box if you have any queries related to today's session. So Karan and I are here and will be happy to There help for you in this. another 1 minute or so. It's already 12:30 and we are actually very short on time. So looks like we don't have any query. So अगर आपको कुछ queries है, then you can type in the chat box. So we'll just take it. Under like 30 seconds to go. So for the option trader, it is something is very much important. That is to look at the chart. I always say that trend is your friend. So if you are a scalp trader, like 10 मिनट 15 मिनट के अंदर पोजीशन खड़ा किया एंड फिर उसको तुरंत बेच दिया, तो if you are a scalp trader, something like the chart is very much important because you need to understand for the market sentiments कि market क्या चल रहा है. Okay. And basis on the candles, so we have already covered like the like कि candles कैसे देखना है if like the three black crows are coming or the hammer pattern is forming. So it is much more easier for one of the person like to take the better informed decisions into the market. So again, the like the Nifty 50 is down around this 23,619. And Karan, if you can just give the outlook on the European markets, क्या अभी European markets क्या चल रहे हैं? I don't have the tickers ready, but I I think थोड़ा jitters अभी आ सकता है. I don't have the tickers ready unfortunately, Okay, okay. but next time we'll have it in place. So with this, we'd like to end our session here, and thank you everyone for attending the today's session. Already we have released the mid-market Yeah. update. That is कि कौन से अभी top gainers and top losers I mean this sectors हैं. So we'd like to end our session here. So thank you so much everyone for attending today's session, and thank you Karan for giving such a great insight. And we'll see you that is on Thursday for our upcoming session on the Nifty 50, where we'll be talking about like the and taking the trades on the Nifty 50 market outlook and how the Nifty 50 is performing and how you can place the orders. So stay tuned and we'll see you on this Thursday. And till then, happy investing and take informed decision. Thank you so Yeah. much. Thank you so much for joining, guys.